Very good day to all of you students. Welcome back to my channel Math Amaze. And currently the lecture which we'll be doing of Theorem of Pythagoras is lecture number 5. So we know the series which we are doing is Geometry Made Easy. The chapter is Pythagoras Theorem. And today we'll be starting with lecture number 5. Okay. So students, in lecture 4, we have already studied about converse of Pythagoras Theorem. Pythagoras theorem was done in the earlier lectures, sums based on it. Then yesterday we loaded converse of Pythagoras theorem, that is lecture 4. Now today we'll be starting with lecture number 5 and we'll be learning a new concept today. Okay, so let us start students with a new concept, that is 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle theorem. Now students, let us understand this concept properly. We don't have to study the theorem, but let us understand this concept. Let us see what does the statement has to say, and accordingly what is the given information and what we have to prove. Here, if the angles of a triangle are 30 degree, 60 degree and 90 degree. So this information gives us an idea that the triangle is a right angle triangle because 90 degree is there. So we have a right angle triangle ABC where angle B is 90 degree. Now angle C and angle A, we can consider any 30 degree or 60 degree. If we consider angle A as 30 degree, then definitely angle C would be 60 degree. So students, what do we know? We know that there is a triangle whose angles are 30 degree, 60 degree and 90 degree. So now the condition is very clear. We can apply this theorem if the angles of a triangle are 30 degree, 60 degree and 90 degree. So let us see what are we supposed to present. We know that in triangle ABC, angle A is 30 degree, then angle C measures 60 degree, and then angle B measures 90 degree. So we know that there are three angles whose measures are 30 degree, 60 degree and 90 degree. If such is the case, or if such is the triangle seen or available in the figure, in the question, we can say what conclusion we can draw. We can say that such a triangle is a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. We can say that the angles are 30, 60, 90. That means the triangle is a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle theorem. So now let us apply the theorem. Now what does the theorem say? If that the angles are 30, 60 and 90, what can we conclude? The conclusion says that side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse. मतलब अगर triangle के तीन angles 30 degree, 60 degree और 90 degree होंगे, तो 30 degree के सामने वाला side. Now tell me which is the side opposite to 30 degree? Yes, BC. तो BC के बारे में कुछ कहा गया है. क्या बोला गया है कि 30 degree के सामने वाला जो side है, side opposite to 30 degree जो है, वो hypotenuse का half है. Now which is the hypotenuse here? BC के बारे में कहा गया है. क्या कहा गया है कि जो 30 डिग्री के सामने वाला साइड BC है वो हाइपोटेनस का हाफ है. ना हाइपोटेनस इज साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो एंगल B है. तो B के सामने कौन सा साइड है बोलो? एंगल B के सामने वी नो हाइपोटेनस हियर इज AC. इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So we can say BC is half of AC. This conclusion we can draw. मतलब if the angles are 30 degree, 60 degree and 90 degree, तो हम बोल सकते हैं कि 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, फिर ट्रायंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, PQR, XYZ, LMN, ABC, कुछ भी हो सकते हैं. 30 डिग्री के सामने वाला जो भी साइड होगा उसका वैल्यू हाइपोटेन्यूज के वैल्यू के हाफ होगा. मतलब अगर हाइपोटेन्यूज 10 है तो 30 डिग्री के सामने वाला साइड 5 होना चाहिए. दिस इज द कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ. ओके, there is one more conclusion we can draw from this. देखो, and और भी एक conclusion है, and the side opposite to 60 degree is √3/2 times the hypotenuse. Now times, students, times means multiplication. √3/2 into hypotenuse. तो अभी कौन से साइड का बात हो रहा है? We are talking about the side opposite to 60 degree. So you can see angle C 60 degree. तो 60 डिग्री के सामने वाला साइड मतलब AB. तो अभी AB के बारे में बात करेंगे. तो क्या बोल सकते हैं AB के बारे में? हम बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू, इज मतलब इज इक्वल टू, इज मतलब इज इक्वल टू
root 3 upon 2 times hypotenuse, root 3 upon 2 into AC. So these are the two conclusions we can draw if the angles of a triangle are 30 degree, 60 degree and 90 degree. So remember students, whenever the angles of a triangle are 30 degree, 60 degree and 90 degree, these are the two conclusions we can draw. We can say that side opposite to 30 degree is half of hypotenuse and side opposite to 60 degree is root 3 upon 2 into hypotenuse. This was in English and this is math. How to write the equation that whichever is the side opposite to 30 degree, we can write that side is equal to half into hypotenuse, and whichever is the side opposite to 60 degree, we can write that side is root 3 upon 2 into hypotenuse. Is it clear to all of you? Did you understand? A very simple, very important concept. Okay, so there are many sums today we'll be doing on the basis of this theorem. So students, I want you to make a note of two formulae. First formula, side opposite to 30 degree is half of hypotenuse. Remember this or make a note of it. Side opposite to 30 degree is equal to half into hypotenuse. And second formula, side opposite to 60 degree is equal to root 3 upon 2 into hypotenuse. And both these formulae we can use only if the triangle is a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. Is it clear? Don't use this formulae in any other triangle. Like if there is only 60 degree given, only 60 degree. We don't know about other two angles. Don't say that side opposite to 60. No. This formula is applicable only and only if the angles of a triangle are 30 degree, 60 degree and 90 degree. Okay. So we should know all the three angles, only then we can use both these formulae. Done, students? Now there is one more theorem which is very easy but very simple to remember. Only one or two sums are there based on this, but very simple. 45 degree, 45 degree, 90 degree triangle theorem. So let us see the statement. The statement goes this way: if the angles of a triangle are 45 degree, 45 degree and 90 degree, that means it's very clear there should be a right angle triangle 90 degree. So angle A is 45 degree and angle C is also 45 degree because angles are 45 degree and 90 degree. So what do we know? We know that in triangle ABC, angle A and angle C both are equal 45 degree. Okay. And angle B, how much is angle B? 90 degree we are considering. So suppose if three angles of a triangle are 45 degree and 90 degree, then what is the conclusion we can draw? We can say that the given triangle is a 45 degree, 90 degree triangle. So triangle ABC is a 45 degree, 90 degree triangle. And now if we have to use the theorem, what is the conclusion? The conclusion says that then the length of the perpendicular sides. Now tell me students, which are the perpendicular sides? Perpendicular sides means the sides making a right angle. The sides making right angle. So the two sides making right angle are AB and BC. So these are the two sides. Now students, we all know very well the two angles are congruent, 45 degree. So if the two angles are congruent, the sides opposite to them also would be congruent by converse of isosceles triangle theorem. Of course, you don't have to prove it now, but we know that if the two angles of a triangle are congruent, then the sides opposite to them are congruent. So AB and BC both would be equal, right? So what we can say about AB and BC? Both are perpendicular sides and they are equal. Therefore, we are writing they're equal. And we know why are they equal? They are equal because they are the side opposite to congruent angle. 45 degree के सामने वाला BC, 45 degree के सामने वाला BC. आपको prove नहीं करना है कि how are they equal, but we should know that they are equal. So what can we say about these perpendicular sides? We can say that perpendicular sides are मतलब equal to is are, okay. So is equal to 1 upon root 2 times the hypotenuse. So 1 upon root 2 times means into, and hypotenuse here is AC. So 1 upon root 2 into AC. Did you understand it? Clear? So remember that if the triangles, if the angles of a triangle are 45 degree and 90 degree, only then we can say that the length of the perpendicular sides are 1 upon root 2 times the hypotenuse. Did you understand this? So this is the conclusion we can draw
if the angles are 45 degree and 90 degree. So same like 30, 60, 90 triangle theorem. This formula we can apply only if the angles are 45 degree and 90 degree. Done? So remember this third formula as well. First formula, I repeat, side opposite to 30 degree is half into hypotenuse. Second formula, side opposite to 60 degree is equal to √3/2 into hypotenuse. And third formula, side opposite to 45 degree is equal to 1/√2 into hypotenuse. Did you understand? So these are the three formulae which you should remember. If I ask a question to you, what is the side opposite to 60 degree? You should be able to say side opposite to 60 degree is √3/2 into hypotenuse. What is side opposite to 45 degree? Is equal to 1/√2 into hypotenuse. And what is side opposite to 30 degree? Yes, it is 1/2 into hypotenuse. Done? So let us start with the sums on the basis of this. Practice set 2.1, sum number 4. There is a figure given to us. In the given figure, find RP and PS. Find RP and PS using the information given in triangle PSR. So now students, if you see triangle PSR, okay, if you see the figure, in triangle PSR, we know that one angle P is given 30 degree and angle S is given 90 degree. So at least we know two angles. So we'll write down that, okay. Angle S is given 90 degree, we know it's given to us. Then angle P is given 30 degree, that is also given to us. So now students, it's very clear. Sum of the measures of the angles of a triangle is 180 degree, we know, right? So 90 and 30 add karo, 90 plus 30 is how much? 90 plus 30 is 180. So तीनों angles का total होता है 180. और 180 में से इन दोनों का total कितना है? 120. So 180 में से 120 minus करो. 180 minus 120, what is the answer? 60 degree. So can we say the value of the third angle would be 60 degree? Yes. Of course, students, you don't have to solve and show. It is like you have to understand as it is. If one angle is 30 degree, second angle is 90 degree, then the third angle has to be 60 degree. Okay. So directly we can say, therefore, measure angle R is equal to 60 degree. And how did we get this? We get it by solving. But here we cannot say we have solved it in stocks, like understood. But then the reason we can say it's the remaining angle of a triangle. Okay. So we should remember that the sum of the measures of the angles of a triangle is 180 degree. If we know two angles, we can get the value of third angle and directly we can state the reason as a remaining angle. Understood this? Fine. Now we can clearly see, students, angle S is 90. That is, one angle is 90, second angle is 30, and third angle is 60. So angles are 30 degree, 60 degree, and 90 degree. So can we say triangle PSR जो है, it's a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle, right? Because angles are 30, 60, and 90. So we all know if the triangle is a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle, we can use 30, 60, 90 triangle theorem. Yes or no? So we know that 30, 60, 90 triangle theorem use कर सकते हैं. So by 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle theorem, we'll be using the formula. In this theorem, we have two formulae. First formula is side opposite to 30, and second formula is side opposite to 60 degree, right? So let us use side opposite to 30 degree. Now many students, they might ask a question, sir, but we know side opposite to 30 degree. 30 degree के सामने वाला side हमें पता है. So why are we using that formula? Yes, we are using that formula to find hypotenuse. Is it clear to all of you? PR का value हमें find करना है, right? So first formula is side opposite to 30 degree. Now tell me, students, which is the side opposite to 30 degree here? RS. 30 degree के सामने RS है. So what can we say about RS? We can say that RS is half of hypotenuse. मतलब RS is equal to 1/2 into hypotenuse. Which is the hypotenuse here in this figure? Yes, 90 degree के सामने वाला side hypotenuse. So hypotenuse is RP, right? So RS is equal to half of RP. इसका reason लिखना होगा. ये formula है किसका? Side opposite to 30 degree का.
So side opposite to 30 degree. Is it clear? Now we'll substitute the values. Therefore, RS का value 6 है, 6 is equal to 1/2 into RP. RP का value पता नहीं है. Now students look here. हमें RP का value ढूंढना है. मतलब ये 2 जो डिनोमिनेटर में है उसको अगर इस साइड पर लेकर गए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. If 2 is shifted on the other side, it would be multiplied. So 6 into 2 हो जाएगा. So therefore, RP is equal to 6 into 2 का वैल्यू कितना होता है? 12 units. Is it clear to all of you? Remember, since centimeter, meter कुछ भी नहीं दिया है, we have to mention it as units. Do not forget that. If you don't write units, your marks would be deducted. So RP we have got as 12 units. Now, students, we have to find out PS. What are we supposed to find out? PS. Okay. So let's say how to get PS. Now, if you see, PS is, we know that angle R is 60 degree. Remaining angle से. So angle R का value 60 degree है, तो R के सामने है PS opposite side. तो PS is opposite to 60 degree. So any side which is opposite to 60 degree is nothing but √3/2 into hypotenuse, right? As per the formula, hypotenuse is RP. Reason would be side opposite to 60 degree. Now let us substitute. PS we don't know. √3/2 as it is into RP. We have found out value of RP as 12 units. Right? So √3/2 into 12. Now here you can do the cancellation. 2 1s are 2 6s are. So now we have got the value for PS as 6√3 units. Did you understand this? Sure. So now we have got the value of RP, we have got the value for PS. Did you understand? So students, this sum will come for 3 marks. A very simple sum, very important. Now let us move on to the next question. Problem set 2, sum number 3. Same type of question. Here if you see in triangle RST, students, angle S is given 90, angle T is given 30. Okay. So we know that angle S is 90 degree given to us. Angle T is also given to us 30 degree. So now students, we all know very well, एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एंगल 30 डिग्री है, तो डेफिनेटली तीसरा एंगल कितना होगा? 60 डिग्री. कैसे मिलेगा? रिमेनिंग एंगल से. सो डायरेक्टली वी कैन से देयरफॉर एंगल R is equal to 60 डिग्री. रीजन रिमेनिंग एंगल, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 होता है, उसमें से 2 वैल्यू पता है, तीसरा हम ढूंढ सकते हैं. तो ढूंढने का जरूरत नहीं, आप ओरली भी कर सकते हो, डायरेक्टली लिखो रीजन रिमेनिंग एंगल. ओके. नाउ एक एंगल 30 डिग्री है यहाँ पर, दूसरा एंगल 60 डिग्री है यहाँ पर, एंड तीसरा एंगल है 90 डिग्री. जब एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री होंगे, वी से ट्राइंगल RST is a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. अगर 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle है, which theorem we can apply? We know that. Yes, we can apply 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle theorem. So by 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle theorem, we can use 2 formulae. First formula is side opposite to 30 degree, and second formula side opposite to 60 degree. हमें जो जो चाहिए वो यूज कर सकते हैं. देखो, what are we supposed to find? We have to find out RS. Now students, RS is opposite to which angle? Yes, RS is opposite to 30 degree. मतलब side opposite to 30 degree का formula होगा. So RS is equal to 1/2 into hypotenuse is RT, we know. फिगर 90 डिग्री के सामने वाला साइड. इसका रीजन होगा side opposite to 30 degree. Now let us substitute the values. RS पता नहीं है, half into RT. If you see RT का value is 12 given to us, right? Now 2 1s are 2 6s are. So we have got the value for RS as 6 centimeters, because 12 centimeter दिया है, तो RS का value 6 centimeter. Did you understand this? Done? Okay. Now we have got the value for RS. अभी क्या find करना है RS के अलावा? ST. Now students, we know that angle R का value 60 degree मिला है, तो ST is opposite to 60 degree. So any side which is opposite to 60 degree is √3/2 into hypotenuse. So what can we say about ST? ST is equal to √3/2. ST is equal to √3/2
into hypotenuse. Hypotenuse is RT, we know. Reason, side opposite to 60 degree. So we'll substitute the values. Therefore, ST is equal to √3 upon 2 into RT is 12. Okay, so 12. 2 ones are 2 6 are. So ST is equal to 6 √3 centimeters. Now here few students, they ask a doubt, so should we substitute the value of √3? If we know the value of √3, 1.73, can we substitute and get the final answer? Then I would like to tell you all, no need to substitute the value of √3. We need to substitute the value of √3 only if it is given in the question. Otherwise, keep as it is. Did you understand? So we have found out RS, we have found out ST. Again, this sum will come for 3 marks. A very simple sum. Next. Question number 2, sub question 1. Find the height of an equilateral triangle having side 2A. So let us have an equilateral triangle whose side is 2A. So AB is 2A, BC is 2A, AC is 2A. Now we have to find the height of an equilateral triangle. Height, we all know height is always perpendicular. So we can draw perpendicular from A, or we can draw perpendicular from B, or we can draw perpendicular from C. But for our better understanding and visualization, we'll draw perpendicular from A. That will be our height. So we can say segment AM is the height of triangle ABC, and BC is the base, right? We have to find height of an equilateral triangle. That means we have to find out AM, right? Now students, we all know, right now we have learned the concept 30, 60 degree, 90 degree triangle, 45 degree, 45 degree, 90 degree triangle. So definitely, let us see, can we use it here? Because apart from sides and 90 degree, we don't know anything. We don't know anything about other angles. But students, remember one thing, very important factor is given to us which you should know. It's a knowledge concept. Whenever the triangle is an equilateral triangle, remember this. Whenever the triangle is an equilateral triangle, then each angle of equilateral triangle is 60 degree, we know. Remember this. If the triangle is an equilateral triangle, then each angle is 60 degree for an equilateral triangle. And all the sides are equal, right? Pata hai sabko? Now students, since we have to find the height of an equilateral triangle, we have to consider a triangle which contains AM as its side. मतलब हमें एक ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसका साइड AM हो. तो AM साइड हो, ऐसे दो ट्राइंगल्स है हमारे पास. पहला ट्राइंगल है AMB और दूसरा ट्राइंगल है AMC. अब दोनों में से आप कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो, कोई भी आपको जो अच्छा लगे ले सकते हैं. नाउ लेट अस टेक ट्राइंगल AMB. हमने AMB लिया है. नाउ लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स वी नो इन दिस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल M का वैल्यू है 90 डिग्री, बिकॉज AM इज द हाइट एंड हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. सो एंगल M का पता है, एंगल AMB इज इक्वल टू 90 डिग्री. गिवन हाइट है ना, तो गिवन है 90 डिग्री, बराबर. एंगल A के बारे में कुछ दिया तो नहीं है. अच्छा, एंगल B के बारे में पता है. यस, एंगल B is 60 degree. It is an angle of an equilateral triangle. Therefore, angle B is 60 degree, right? अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर एंगल A के बारे में कुछ पता कैसे नहीं है. ना, लिसन, ये ना पूरे ट्राइंगल ABC का एंगल A नहीं है. ट्राइंगल ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो पूरा एंगल A, पूरा एंगल A 60 डिग्री है. ये इतना सा एंगल 60 डिग्री नहीं है. नहीं तो ये कंफ्यूजन बच्चों का होता है कि इसके बारे में हमें पता है. नो, पूरा एंगल A 60 डिग्री है पूरा. बट हम इसका बात करें सिर्फ ये थोड़े पार्ट का. इज इट क्लियर? चलो, अब इस ट्राइंगल को देखो. एक एंगल है 90 डिग्री, दूसरा एंगल है 60 डिग्री. तो डेफिनेटली ये एंगल का वैल्यू मिल सकता है. यस, वेरी गुड. ये एंगल का वैल्यू कितना होगा? 30 डिग्री. एंड रीजन वुड बी रिमेनिंग एंगल. सो कौन सा एंगल का बात हो रहा है? एंगल A. तो एंगल A को 3 लेटर में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? एंगल BAM. Is it clear?
So we have got the value for angle BAM 30 degree, reason remaining angle. Did you understand? So अभी देखो इस highlighted triangle में एक एंगल है 30 डिग्री, दूसरा एंगल है 60 डिग्री, तीसरा एंगल है 90 डिग्री. So can we say therefore triangle ABM or AMB is a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle? And we all know if the triangle is a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle, which theorem to be applied? Yes, 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle theorem. So we'll write that by 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle theorem, we'll use two formulae, matlab as per our requirement. First formula side opposite to 30 degree, second formula side opposite to 60 degree. Now here हमें find क्या करना है? हमें find करना है height. Height मतलब AM find करना है. So let's see students, AM is opposite to which angle? AM is opposite to 60 degree. मतलब हमें साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सो AM इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस. हाइपोटेनस कौन सा साइड होगा? 90 डिग्री के सामने वाला AB. सो AB इज द हाइपोटेनस. रीजन होगा साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री. राइट, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं. AM इज इक्वल टू √3/2 इंटू AB का वैल्यू इज 2A. 2 will get cancelled. So we got the value for AM as √3A units. √3 and A units. Now please ध्यान से सुनना, ये रूट है ना, रूट सिर्फ 3 के लिए है, A के लिए नहीं है. तो लिखते वक्त इस चीज का ध्यान देना कि ये जो रूट का ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये A पर नहीं आना चाहिए. अगर A इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आ गया तो इसका मतलब हो गया 3A दोनों भी स्क्वायर रूट के अंदर है. नो, सिर्फ 3 का स्क्वायर रूट है, A का नहीं. तो A रूट के बाहर लिखना है. सो वैल्यू ऑफ AM वी हैव गॉट एज √3A यूनिट्स. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ स्टूडेंट्स, हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री. दूसरे का जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए दूसरा यूज नहीं किया. सो रिमेंबर, जितना हमें जरूरत है उतने में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. दिस सम विल कम फॉर 2 marks. Okay, a very simple sum, easy. Now let us see this sum. Find the length of side and perimeter of an equilateral triangle. Now students remember, equilateral triangle मतलब each angle 60 degree, all sides equal. याद रखना ये. Height is given √3 centimeter, मतलब इस triangle का height दिया है. तो for better understanding हमने AM perpendicular draw कर लिया है. And how much is AM given? √3 centimeter given to us. So height of equilateral triangle is given to us. Now what are we supposed to find in this sum? We are supposed to find the length of the side पहले and perimeter. तो पहले length of the side. Side मतलब हमें AB, BC और AC इनमें से किसी का भी वैल्यू ढूंढना है. राइट, बराबर है, किसी भी एक का ढूंढना है because it is an equilateral triangle. So now students, let us say we are supposed to find AB. So let us take triangle AMB. Because we all know, पिछले सम में भी हमने किया था, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना है because AM का भी वैल्यू दिया हुआ है. सो इस ट्राइंगल AMB में हमें पता है कि एंगल M का वैल्यू है 90 डिग्री. एंगल AMB, दिस एंगल इज 90 डिग्री गिवन टू अस. बराबर है. अच्छा, एंगल B का वैल्यू भी हमें पता है. एंगल B का वैल्यू 60 डिग्री होगा. पता है क्यों 60 डिग्री है? बिकॉज इट इज एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. देन थर्ड एंगल जो एंगल A है, तो एंगल BAM, ये एंगल का वैल्यू इजीली मिल सकता है 30 डिग्री, रीजन रिमेनिंग एंगल. बराबर है. सो ट्राइंगल बिकम्स अ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल. बराबर है. अगर ये ट्राइंगल 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल है तो बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल थियरम वी कैन यूज 2 फॉर्मूले. जो चाहिए वो यूज कर सकते हैं. नाउ इससे हमें साइड फाइंड करना है, मतलब AB फाइंड करना है. एंड AB इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस है, मतलब हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है. और हमें AM का वैल्यू दिया हुआ है. AM इज ऑपोजिट टू 60 डिग्री, तो साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड आउट हाइपोटेनस. सो लेट अस यूज द फॉर्मूला फॉर साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री. साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज AM. तो AM के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि AM is equal to √3/2 into
hypotenuse is AB, region side opposite to 60 degree, right? Now students listen carefully, हमें किसका वैल्यू ढूंढना है? AB का वैल्यू ढूंढना है, मतलब AB को अकेला रखना है, AB को अकेला रखना है, मतलब ये 2 जो डिवाइडेड है वो यहां पर जाके मल्टीप्लाई होगा एंड √3 जो मल्टीप्लाई है वो यहां पर जाके डिवाइड होगा. सो वी कैन से देयरफॉर AB इज इक्वल टू, AB को अकेला किया, AB इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 इनटू AM. समझा सबको ये स्टेप? हमने क्या किया देखो, 2 डिवाइडेड था, AM के यहां पर जाके मल्टीप्लाई किया एंड √3 जो मल्टीप्लाई है वो AM के यहां पर जाके डिवाइड हुआ. So 2 multiply हुआ, √3 डिवाइड हुआ AM के यहाँ पर. Is it very clear? Now we'll substitute the value of AM. 2 upon √3 as it is into value of AM is given √3. So now tell me students, √3 denominator का √3 numerator का cancel हो सकता है. So what is the value for AB? Yes, we can say therefore AB is equal to 2 centimeter. Done. So we have found out length of the side of a triangle. Equilateral triangle है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगे, एक भी साइड मिला तो तीनों साइड्स का वैल्यू मिल सकता है, बट हमें एक ही साइड का वैल्यू ढूंढना है, मतलब AB BC किसी का भी ढूंढो, हमने AB का ढूंढ लिया. अभी हमें क्या फाइंड करना है? ओके, लेट्स सी. फाइंड द लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर? यस, पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल द साइड्स. इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, सो कैन वी से पेरीमीटर का फॉर्मूला इज 3 इनटू साइड. पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 3 इनटू साइड. सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 3 इनटू साइड. साइड का मतलब विच साइड वी हैव फाउंड आउट? AB. सो 3 इनटू AB, राइट, इज इक्वल टू 3 इनटू 2. AB का वैल्यू इज 2. सो 3 2 जा कितना? 6. सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 6 centimeter. So this is our final answer. So we have got the length of side of an equilateral triangle and also we have got the perimeter of an equilateral triangle. This sum will come for 3 marks. A very easy, very simple sum. Did you understand, students? Achha, are you understanding the presentation, how to do it? Yeah? That's good. Now let us see this sum. Again, it's an equilateral triangle. So we all know in equilateral triangle, all the sides are equal and each angle is 60 degree. So triangle ABC is an equilateral triangle. So let us have this equilateral triangle. Point P is on base BC such that PC is 1/3 BC. Value of AB is given 6. Okay. And find AP. So students, before concluding all these things, we know that it is an equilateral triangle. So it's a question in front of the screen to all of you. What do we know about the sides of an equilateral triangle? Yes, we have already discussed this. We know that all the sides are equal. So can we say AB, BC and AC, all the 3 sides are equal? Yes. Equation number 1. Reason sides of an equilateral triangle. Right? Fine. Further, if you see, the information is given that AB is 6 centimeter. This is given to us. Now students, if AB is 6 centimeter, if AB is 6 centimeter, can we say BC and AC both also would be 6 centimeter? So we can say therefore BC is equal to AC is equal to 6 centimeter. Reason would be from given and equation 1. Okay, this is equation 2. Reason iska likh sakte hain from 1 and given also you can write if you want. Okay, so now we have got the value for BC as well as AC as 6 centimeter. All the 3 sides are equal, so each side is 6 centimeter. Now students, we have to find out AP. Now where is point P located? Clearly see in the figure. Point P is on base BC such that PC is 1/3 BC. मतलब PC है ना, PC वो BC का 1/3 हिस्सा है, 1/3. तो PC छोटा हिस्सा है. 2/3 होता, 2/3 होता तो PC बड़ा हिस्सा होता. मतलब BC के 3 टुकड़े हैं. 1/3 मतलब BC के 3 टुकड़े होंगे. 3 में से 1 टुकड़ा PC होगा. 1 टुकड़ा. तो PC अगर P लोकेट करना है तो PC के नजदीक लोकेट करना है, B के नजदीक नहीं, C के नजदीक. क्यों? बिकॉज PC जो है वो BC का 1/3 है. ओके, सो लेट्स टेक P नियर टू C समवेयर. नाउ क्वेश्चन में पूछा है फाइंड AP, बराबर. अच्छा, व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन PC के बारे में? PC इज 1/3 BC.
This is equation 3, we can say, okay, given to us. Or let us see, we can take it later on. Here, apart from the students, ये given है इसलिए इसको equation नहीं mark किया, that is also okay. Okay, PC is 1/3 BC, so this is given. Now find करना है AP, बराबर है. Now students, if you look here, PC is 1/3 BC, right? Now BC का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर. So can we substitute there? So 1/3 into 6. So cancellation हो सकता है, 3 1s are 3 2s are. So we have got the value for PC as 2 centimeter. Now this we can mark it as equation 3. Okay? Because ये value मिला directly, because ये value का कहीं ना तो कहीं तो फायदा होगा. So PC is 2 centimeter. We are marking it as equation number 3. And finally we all know क्या find करना है, हमें find करना है AP. तो हमने AP draw कर लिया है. Done. Now students, अगर आप ध्यान से देखो इस पूरे फिगर को एंड सम को, इसमें कहीं पर भी राइट एंगल नहीं है. राइट एंगल कहीं पर भी नहीं है. तो डेफिनेटली हमने अभी तक के जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं, जितने भी, वो यूज ही नहीं हो सकते. बिकॉज पाइथागोरस हो, 45 डिग्री 90 हो, 30 60 90 हो, कहीं पर भी ये कंसेप्ट यूज ही नहीं किया जा सकते, ये सारे कंसेप्ट्स. तो लेट अस सी कि अगर हमें AP फाइंड करना है एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल भी दिया हुआ है, तो वी नीड अ हाइट, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A टू साइड BC. तो लेट अस ड्रॉ दैट. ओके, सो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ये अपने मर्जी से किया है, बिकॉज हमें पता है क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है आगे जो प्रोसीड कर सकते हैं. वी कैन नॉट यूज एनी अदर कंसेप्ट व्हिच वी हैव लर्नड हियर. जितना भी दिया था, जितने भी कंसेप्ट्स थे, वो सारे यूज करके हो गए. बट अभी कंसेप्ट्स आगे की यूज करने के लिए हमें परपेंडिकुलर की जरूरत है, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन अपने मर्जी से किया. तो क्या किया हमने? ड्रॉ सेगमेंट AM परपेंडिकुलर टू साइड BC. So this is construction. Draw AM perpendicular to BC. Right? Done. अच्छा, we all know हमें find क्या करना है? हमें find करना है AP. बराबर? So can you say AP belongs to right angle triangle AMP? AP belongs to right angle triangle AMP. Now right angle triangle में AP hypotenuse है. AP क्या है? Hypotenuse है. तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. Right? So AP square is equal to AM square plus PM square. ये पाइथागोरस थ्योरम है. हमें AP का वैल्यू ढूंढना है, मतलब we should know AM first. जो AM हमें पता नहीं है. Then we should know PM also. PM का भी वैल्यू हमें पता नहीं है. मतलब it is very clear, अपना हिंट है, we have to find out AM and PM. अगर AM और PM का वैल्यू ढूंढ लिया तो पाइथागोरस थ्योरम से AP का वैल्यू मिल सकता है. Is this very clear to all of you? Now let us see what more can we think of. अभी इस छोटे ट्रायंगल में तो कुछ नहीं होगा. पाइथागोरस थ्योरम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बट वैल्यू किसी का पता नहीं, तो AP का वैल्यू नहीं मिल सकता है. So students, let us take another right angle triangle, that is AMC. AMC. Now let us see इस ट्रायंगल में हमें क्या पता है. सबसे पहले इस ट्रायंगल AMC में हमें पता है कि एंगल M 90 डिग्री है और एंगल C 60 डिग्री है. बता एंगल C 60 डिग्री क्यों है? एंगल C 60 डिग्री है बिकॉज इट इज एन एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. फिर हमें यह भी पता है कि एंगल M 90 डिग्री है. एंगल M 90 डिग्री क्यों है? कंस्ट्रक्शन से पता है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. सो एक एंगल 60 डिग्री है, एंगल C. एंगल M 90 डिग्री है. तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एंगल? एंगल CAM. व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल CAM? इट्स 30 डिग्री. रीजन रिमेनिंग एंगल. बराबर. सो ट्रायंगल AMC इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल. अगर 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल है तो वी कैन यूज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम. बराबर. अब ये थ्योरम यूज करने के लिए वी नीड टू नो टू फॉर्मूले. फर्स्ट इज साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री एंड साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री. सो टेल मी स्टूडेंट्स, अगर ये 60 डिग्री है
तो AM इज द साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, एंड अगर ये एंगल A 30 डिग्री है तो CM इज साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। तो अभी देखते हैं इनके बारे में क्या इक्वेशन हमें मिल सकता है। सो CM इज ऑपोजिट टू 30 डिग्री, तो CM इज इक्वल टू हाफ इनटू हाइपोटेनस। कैन वी से हाइपोटेनस इज AC, so half AC. Reason side opposite to, yes, 30 degree. Now students, we know the value for AC. So CM is equal to half into AC का वैल्यू पता है हमको, बराबर ना। AC का वैल्यू देखो इक्वेशन 2 में 6 है। So now we can do the cancellation. 2 ones are 2, 3s are. So CM is equal to 3 सेंटीमीटर, राइट। तो CM का वैल्यू मिला, ये भी हमारे काम का होगा कहीं ना कहीं, तो बराबर है। सो मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 4। अब AM का वैल्यू ढूंढते हैं। AM साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री है, सो AM इज इक्वल टू √3/2 इनटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज AC, रीजन साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। सो AM इज इक्वल टू √3/2 इनटू AC का वैल्यू इज 6, वी नो। सो 2 ones are 2, 3s are. So AM is equal to 3√3 सेंटीमीटर। ये भी काम का चीज है, कहीं ना कहीं तो चाहिए, बिकॉज हिंट में तो हमने बोला था हमें AM का वैल्यू चाहिए। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। डन। सो हमें AM मिल गया है, अभी हमें क्या ढूंढना है, PM, बराबर। बिकॉज अगर AM मिला, PM मिला, तो AP हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स, PM को ध्यान से देखो, PM फिगर में देखो PM को, बराबर। Now can we say there is a betweenness existing between C, P and M, C dash, P dash, M बोल सकते हैं। अगर C dash, P dash, M बोल सकते हैं, तो अगर मैं आपको पूछूं can we say PM is equal to CM minus PC, पूरे CM में से अगर CP माइनस करो, CP को माइनस करो तो PM मिलेगा। So PM is equal to CM माइनस CP, इसका रीजन C डैश P डैश M। समझा सबको ये? बिकॉज CP प्लस PM इज CM, CP प्लस PM इज इक्वल टू CM। सो अगर PM का वैल्यू चाहिए तो PM वुड बी CM माइनस CP। लेट अस सी किसका वैल्यू पता है। PM इज CM का वैल्यू पता है, हाँ यस पता है। इक्वेशन 4 में देखो, इक्वेशन 4 में CM का वैल्यू पता है, राइट। कितना पता है, 3 माइनस CP मतलब PC, बराबर। सो PC का वैल्यू भी पता है 2 सेंटीमीटर, इक्वेशन 3 में। तो ये 3 कहां से मिला, 4 से। 2 कहां से मिला, 3 से। सो रीजन भी लिख सकते हैं फ्रॉम 3 and 4। ओके, नाउ 3 में से 2 माइनस करो तो आंसर कितना बचेगा, 1। सो वी कैन से PM इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। विल मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 6, राइट। नाउ लिसन केयरफुली, अभी हम ट्रायंगल AMP में पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। AMP में पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, बिकॉज AM का वैल्यू मिला है, PM का वैल्यू मिला है। सो इन ट्रायंगल AMP, एंगल AMP is 90 degree. Why 90 degree? We all know its construction. So now we can use Pythagoras theorem. So AP square is equal to AM square plus PM square. Reason, by Pythagoras theorem. Therefore AP square will be as it is. AM का वैल्यू, हमने AM का वैल्यू ढूंढा है, देखो इधर AM is 3√3, so 3√3 the whole square plus PM का वैल्यू भी हमने ढूंढा है, PM is 1 centimeter, so 1 square. Now let's see this, AP square is equal to, ध्यान से सुनना, 3 का स्क्वायर is 9, 3 का स्क्वायर is 9 and √3 का स्क्वायर is 3, 3 का स्क्वायर is 9 and √3 का स्क्वायर is 3, so 9 3s are 27 plus 1 का स्क्वायर is 1, so we can say therefore AP square is equal to 28. Now 28 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, so now if you take the square root, we can say therefore AP is equal to square root of 28, and reason would be taking square roots. Now 28 के फैक्टर्स अगर निकालेंगे तो we can say therefore AP is equal to square root of 4 into 7, 4 7 28 है, बराबर।
ऐसे दो फैक्टर्स निकालो जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हो। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 14 2 जा भी 28 होते हैं, बट 14 एंड 2 दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फैक्टर्स इस तरह से निकालो उसमें से एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, बराबर। सो 4 7 जा 28। सो अभी 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, square root of 4 is 2, so we can say therefore AP is equal to 2 root 7 centimeters. So we have got the value for AP. Is this very clear to all of you? So students, this was a very important sum for 4 marks. Okay, so that's it for today. We have concluded with lecture number 5. Whatever we have learned is 30 60 90 45 45 90, and we have learned the sums on the basis of that. Okay, there are few more sums which will be learning in lecture number 6. So students, you all know, please do subscribe to my channel. My channel's name is Mathamaze. Please share the video if you really like it, and then let all other students benefit. Okay, and do not forget to tap the bell icon, because after this chapter I'll be uploading other chapters too. Okay, so let us complete this chapter in a synchronized manner, and then we'll talk about, and I will be recording other chapters for you all. So what will happen, you will get the benefit of learning at home at your ease. Okay, bye. Good day to all of you all. Take care. Love you all. Bye.